ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପଢଉଥିଲି ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜି ର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ डिस्कशंस କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ रे ड्रॉप्स लाइट एब्जॉर्प्शन लाइट रो डिफरेंट रेस एसो विषय आम मैंने डिस्कशंस करते। तो आज आम मैंने पिले डिस्कशंस करबा कोन ना फोटोसिंथेसिस रो पार्ट 3 जो थरे कि आमे माने एक्चुअल लाइट रिएक्शन केमती तमरो एटीपी रो जनरेशन होउची जोटा हमर होई था। तो सेटा केमती होउची से विषय रे आमे माने देखिबा आज बाजरा क्लास रे। तो एथरे हमर कोन रहइबो पिले लाइट रिएक्शन ही रहइबो। तो से जा पार्ट रे मु तमन जति कि पढितली त आज हम माने लाइट रिएक्शन रो जो मुख्य रहइबो जो पिगमेंट सिस्टम बा फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 तो ता ऊपर आज हम माने डिस्कशन करछंती। तो प्रथम आसला कोन ना फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो देखो पिले फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कोन कहि दोजी तमन को। There are two type of photosystem in the light dependent reaction। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बा जाको हमें कहउछंती कोन आलोक प्रक्रिया जेटा लाइट रो प्रेजेंस रे हेता जोटा लाइट रो उपस्थित रहिता सेही प्रकार रिएक्शन हमें माने कहउछंती कोन ना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो एठी दुईटी फोटो सिस्टम थाए। तो ये फोटो सिस्टम रो काम होला सोलर एनर्जी को ट्रैप करिवो सोलर एनर्जी को कंज्यूम करिवो ता भितरे नेकी रखिवो। तो गोटे हला कोन ना फोटो सिस्टम 2 अनदर इज द फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 बा PS2 आ गोटे हला फोटो सिस्टम 1 बा PS1। The photosystem 2 comes first in the path of electron flow but its name as second because it was discovered after the PS1। तो फोटोसिस्टम 1 पर ही तमरो फोटोसिस्टम 2 रो डिस्कवर करा जायछला सेति पय आको फोटोसिस्टम 2 बोली कहैछला। बट एक्चुअल लाइट रिएक्शन ने तमरो प्रथमे ही फोटोसिस्टम 2 ही कोन करिवो ना लाइट को एब्जॉर्ब करेबो बा लाइट को नेकी ता इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेबो जा फल इलेक्ट्रॉन कोन करिवो ना डेइबो उछलेगा बुझि परछि। Here are some of the key difference between the photosystem जो तमनकर एग्जाम रे आसे फोटोसिस्टम भितर किछि डिफरेंस लेखिया पे तमने लेखि परिबा आराम से। तो से कोन कहूची the chlorophyll A special pair of the two photosystem absorb different wavelength of the light। माने से जो फोटोसिस्टम भितर तार जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टाको बा क्लोरोफिल पिगमेंट टाको एमिति भागे रे मॉडिफाई करा जायछि से माने अलग अलग सूर्यंकर दुईटी रे को कोन करिवे ना एब्जॉर्ब करी पारिबे। फोटोसिस्टम 2 स्पेशल पेयर एब्जॉर्ब बेस्ड एट द 680 नैनोमीटर। तो ये तमरो सूर्यंक किरण रो 680 नैनोमीटर रे भलो एब्जॉर्प्शन देखाइताय। सेही बळी तमरो फोटोसिस्टम 1 तमरो कोन करथाय ना 700 नैनोमीटर रे तमरो भलो एब्जॉर्प्शन शो करेथाय। Because of this the special pair is called as P680 and P700 respectively। तो सेही फोटोसिस्टम को 680 फोटोसिस्टम आ फोटोसिस्टम 700 काई का को बेसिस करी से मानक ना दिया कि ना से मानकर एब्जॉर्प्शन नो टाइम से माने को वेवलेंथ रे एब्जॉर्प्शन नो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नो वेवलेंथ अनुसार से मानकर ना एटी पढी छि। तो प्रथम असला कोन ना प्राइमरी रिसेप्टर the special pair of each photosystem passes electron to a different primary acceptor। तो एमानक दे दुईटी स्पेशल पेयर रही थाय पिले गोटे फोटोसिस्टम रे जा फल से माने कोन करतांती ना इलेक्ट्रॉन को ता देरे पास करई थांती। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ photosystem 2 is pheophytin and the organic molecule that resembles chlorophyll while the primary electron acceptor of photosynthesis chlorophyll chlorophyll called A078। तो एड तो मान देखो तमरा प्राइमरी रिसेप्टर फोटोसिस्टम 2 रे किए ना फियोफाइटिन होची प्राइमरी रिसेप्टर इन द फोटोसिस्टम 2। सेम तमरा फोटोसिस्टम 1 धीरे होची तमरा किए ना A078 ये रे तमरा प्राइमरी रिसेप्टर। देन तापरला सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन once an electron is lost each photosystem is replenished by electron from a different source। सपोज जदि कोनोसी गोटे फोटो सिस्टम रे कोन हला ना इलेक्ट्रॉन तमरो लॉस्ट हे गला बा इलेक्ट्रॉन जदि क्षय हे गला तले प्रत्येक फोटो सिस्टम कोन करना रिप्लेनिश्ड माने कोड गोटे से माने कोन करिवे ना इलेक्ट्रॉन आनी पारिबे पुनी अगेन से जगह टाको भरी पारिबे। द फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। तो फोटो सिस्टम 2 कोउटी इलेक्ट्रॉन आनुची ना वाटर को भांगीबो भांगी साइला पर तमरो इलेक्ट्रॉन आउ ऑक्सीजन रिलीज हबो।
while the photosystem 2 reaction center is replenished by the electron that flow down an electron transport chain from the PS2. The photosystem 1 तमर electron कोड आणुची ना जो photosystem 2 धिरे जो electron flow होची से electron flow होई कि तमर आसी कोडी पहुंचुची ना photosystem 1 पाखेरे. नेक्स्ट स्लाइड को जा पिले. एबे आसले कोन ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मीन इट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्शन हबो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बा डिफरेंट कंपाउंड मानक माध्यम रे बा कंपाउंड मानक सहारा करी कि इलेक्ट्रॉन कोन हबो ना आगु को पढिबो. ता सहित कोन कहूची ना फोटोफॉस्फोराइलेशन पिले कोन ना लाइट रो प्रेजेंस रे एटीपी रो फॉर्मेशन हबो. दैट इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फो मीन फॉस्फेट. एटी कहार फॉस्फेट ना एडेनाइन नो फॉस्फेट आड हबो. एडेनाइन मोनोफॉस्फेट दिए दुईटी फॉस्फेट आड हबो जा फल से एटीपी कन्वर्ट हबो. तो सेति पई एटी फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखला. एडीबी तमे करि पार, एटीपी करि पार, किछ असुविधा नै. तो थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ फोटोसिस्टम 2 ते जते बेले एक्टिवेशन हे जाउची कहार ना फोटोसिस्टम 2 रो. तो फोटोफॉस्फोराइलेशन यूजेस सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट एडीबी टू एटीपी. तो फोटोफॉस्फोराइलेशन द्वारा कोन होउची ना सोलर एनर्जी तमरो कन्वर्ट होउची काउ कन्वर्ट करोउची एडीबी को एटीपी रे. In this a process is known as photolysis. तो एई प्रोसेस रे कोन होची ना फोटोलिसिस होची. कोन फोटोलिसिस होची ना लाइट रो प्रेजेंस रे वाटर मॉलिक्यूल कोन होची भांगी के ऑक्सीजन आ हाइड्रोजन को कन्वर्ट हेई जाउची. तो फोटोलिसिस स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन्स प्रोटॉन्स. बुझी परछ पिले. हां. An ongoing unidirectional flow of electron from water to photosystem 1 is then carried out. गोटे डायरेक्शन रे फ्लो होतबा इलेक्ट्रॉन तमरो कोन हबो ना बाहरी आसे from the water to the photosystem 1 is then carried out. So the action of the enzyme ATP synthase, the action of the enzyme ATP synthase, the ATP is produced and the electron travels spontaneously. तो जेतबेले ATP synthase जे ATP को synthesis करबे तो सीए तमरो एक्टिवेट हेई जाउची. जेतबेले सीए तमरो कोन होउची ना एक्टिवेट हेई जाउची. से कोन करूची पिले the travel spontaneously from the donor to the acceptor through the electron transport chain. तो पूरा डोनर कतरु तमरो एक्सेप्टर पर्यंत कोन होउची ना इलेक्ट्रॉन तमरो मूव करूची बाय द का द्वारा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा. A chain of redox reaction known as electron transport chain specially transfer electron from a high energy molecule to a low energy molecule. अच्छा एटी कोन होउची ना तमरा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मान जो जगह अधिक परिमाण रे एनर्जी अछि एवं जो जगह कम परिमाण रे एनर्जी अछि तो अधिक रु कम कथि कोन होउची ना एनर्जी तमरो ट्रांसफर होउची. द फ्लो ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा टू द थाइलाकॉइड स्पेस क्रिएट ए ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडिएंट ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो अधिक परिमाण रा तमरो इलेक्ट्रॉन को जगह रहिछि पिले ना स्ट्रोमा दियरे. तो सेटु तमरो मूव हबो कोउठी कि ना थाइलाकॉइड कहा द्वारा ना गोटे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडिएंट मान अधिक कम भितर जो प्रेशर तैयारी हबो. बुझि परछ अधिक रु कम को जो फ्लो हबो इलेक्ट्रॉन सेटा को से कहूची इलेक्ट्रोकेमिकल. This proton gradient is established as the power of ATP synthase. तो ये तमर का द्वारा संपन्नित हबो ना ATP synthase enzyme रा एक्टिविटी द्वारा. And ATP is subsequently produced by the phosphorylation. एवं ता द्वारा तमर ATP रा मध्य फॉर्मेशन हबो. तो फोटोफॉस्फोराइलेशन पिला तमरो दुई प्रकार रो. गोटेला नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आ गोटेला साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. गोटेला नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन गोटेला साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. जीवा तो फास्ट आज मैंने पढ़िया कोन ना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो तमे माने देखिबो जे एक्चुअली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कोन होउची माने एटी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कोन हबो माने तमरा इलेक्ट्रॉन ता जेमति जीवो पुनी अगेन से जगह को फेरी आसीओ. दैट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. देखिबा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कोन. फोटोफॉस्फोराइलेशन इन ए साइकिल. तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कोन ए तमरो गोटे साइकिल परी माने गोटे साइकिल द्वारा ही संपादित होइताय. फोटोफॉस्फोराइलेशन इन ए साइकिल बाकु साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोली कहै जेते. बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द नेम गिवन टू द फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस that lead to the cyclic movement of electron during the synthesis of ATP molecules. जेतबे ATP molecule synthesis होउची सेतबेले तमरो कोन होउची ना एटी इलेक्ट्रॉन साइक्लिक आकार रे बुलुची, साइकिल आकार रे बुलुची गोटे सर्कल टाइप रो जो जोटू से जाउची पुनी अगेन से जगह को पुनी फेरी आसुची. सेति पय ता ना पड़ची कोन ना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन.
In this process, the plant cell only convert ADP to ATP to provide the cell with immediate energy. ये सांगे सांग तमर हबो हठात कि सांगे सांग तमर एटा हबो इमीडिएटली तमर एटा हबो आर स्टेप्स गुडी को पिला माने हम देखिबा आर स्टेप्स कोन कोन रही छी these are some steps in the cyclic photophosphorylation प्रथम आसला कोन लाइट हीट फोटोसिस्टम 1 प्रथम आसला कोन लाइट हीट्स फोटोसिस्टम 1 प्रथम लाइट आसीबो फोटोसिस्टम ऊपर पडिबो का ऊपर पडिबो ना फोटोसिस्टम ऊपर पडिबो at the start of the cycle photophosphorylation process photosystem 1 is heated by the photon a particle with a quantum of light energy the photosystem and color absorb the energy आमे माने जानिते कोन ना सूर्यन कतुर आसुतबा लाइट गुडी सब फोटोन आकार रे आसीते बा जक आमे कहउथिन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी बा फोटॉन्स बा ताकू क्वांटम बोली आमे माने कहउबा क्वांटम ऑफ लाइट बोली आमे माने कहउछन तो से फोटोन आकार रे आसिला त आसिला पर ताकू एटी कोन होला ना फोटो सिस्टम 1 तमरा अब्सॉर्ब करी नै जाउचे कोन होउची ना अब्सॉर्ब करी की नै जाउचे बुझी पर जाना कथा एटी से कोन करची ना अब्सॉर्ब करी की नै जाउचे the accessory pigment of photosystem 1 that is P700 reaction center the pigment supply energy of the P700 reaction center the P700 reactions electron get restored to higher energy by absorbing energy से कौन कहूची the pigment supply energy to the P700 reaction center एटी से pigment कौन करूची ना प्रथमे P700 reaction center को energy provide करूची first ताकू से प्रथमे एक्टिवेट करे देला तमर जो इलेक्ट्रॉन आसिला सॉरी जो लाइट एनर्जी आसिला से प्रथमे P700 प्रथमे ताकू अब्सॉर्ब करिने से निजे एक्साइटेड हे गला the P700 reaction electron get restored to the high energy by absorbing energy तो ता देर तो इलेक्ट्रॉन तमर कोन होला सूर्यन को आसिला किरण को पाई के से अधिक मन जो एक्साइटेड हे जानती सही बोली हे गला से कला रिएक्शन विल गेट रिस्टोर एट द हायर एनर्जी बाय द अब्सॉर्बिंग एनर्जी जो हायर एनर्जी ता बॉडी भीतर थिला से सब रिस्टोर हैला का द्वारा ना अब्सॉर्बिंग एनर्जी द्वारा এবং सिंगल इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम द P700 रिएक्शन सेंटर এবং जा फଳରେ से कोन कला ना सेटू से इलेक्ट्रॉन को कोन कला ना ट्रांसफर करई देला कोन कला ना ट्रांसफर करे देला अच्छा एबे आसला कोन ना P700 टू फेरोडक्सिन एबे पुनी इलेक्ट्रॉन कोडी कोडी की मूव करिवो ना P700 टू फेरोडक्सिन पाखु को मूव करिवो द इलेक्ट्रॉन ऑफ द P700 रिएक्शन सेंटर इज अनस्टेबल जेतबले P700 तमरो सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करला सेतबले से एक्साइटेड हे गला से अनस्टेबल हे की रहला ताकू स्टेबिलिटी आनिया पई सी कोन करे ता इलेक्ट्रॉन ताकू छाडीबाकू पडिवो the P700 reaction center electron jump out of its higher energy orbital and is captured by the chlorophyll AO from the molecule of AO goes to the molecule A1 then which is higher potential than AO a cluster of iron and sulfur will now get the electron that has formed with the molecule of A1 ये तमर कोन हो एडी तमान देखि परतो पिले ये प्रथमे एक्टिवेट हे गला एठू इलेक्ट्रॉन तमर पाई की देन पुनी कोन करिवो ये AO कति की छाडीला देन AO एठू तमर छला A1 कति की ए माने समस्त रह जंदी इलेक्ट्रॉन को कैरी करिया पे बुझी परछ की तो AO तमर फास्ट कोन ला सी प्रथमे एक्टिवेट हैला क्लोरोफिल जाको हमें AO बोली कहउ जंदी देन से कोन करे ना A1 कति की छाडीला देन A1 छाडला का कति ना आयरन सल्फर ए माने कति गोटे क्लस्टर जाको हम फेरोडक्सिन बोली कहउ जंदी एपी स्ट्रक्चर माने तमरो फेरोडक्सिन ता परे आसीबा आयरन आउ तमरो सल्फर गोटे प्रकार कॉम्प्लेक्स गोटे प्रकार स्ट्रक्चर जे कि इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करिवो देन तापरे कोन होला पिले ना FeS release the electron which is then caused by the FD or ferredoxin then तापर FeS से माने जो इलेक्ट्रॉन ता को छाडीबे ताकू FD तमरो कोन करिवो ना कैप्चर करी नै जीवो the stroma and the thylakoid membrane have the water soluble protein that is the FD जो स्ट्रोमा अछि आ तमरो कोन ना जो फेरोडक्सिन अछि जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन अछि एमान कोन ना वाटर सॉल्युबल प्रोटीन हो जो तांका पई की ना एफडी बुझि पाइलो दिस प्रोटीन मूव ये तमरो कोन करे ना मूव करबो एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ P700 मूव फ्रॉम द P700 टू द एफडी मॉलिक्यूल तो ये तमरो कोन हबो ना तमरो जो इलेक्ट्रॉन थिबो से पुनी अगेन P700 को फेरी आसीबो का द्वारा ना तमरो एई फेरोडक्सिन
द्वारा तापर देखिया फेरोडक्सिन इनटू प्लास्टोक्विनोन माने फेरोडक्सिन एठी होची मुख्य भूमिका गोटे ग्रहण करूची माने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करियारे फेरोडक्सिन प्लास्टोक्विनोन तो फेरोडक्सिन तो एक्साइटेड हे जो से कोन करियो नै कि इलेक्ट्रॉन का को दबो ना प्लास्टोक्विनोन को दबो इन द स्ट्रोमा प्लास्टोक्विनोन को नै कि प्लास्टोक्विनोन पाखरे नै कि पहुंचेबो इलेक्ट्रॉन को तापर प्लास्टोक्विनोन साइट B6F the two hydrogen particles are moved by the plastoquinons or it is additionally required two electron तो दीटा तमरो कोन हाइड्रोजन पार्टिकल बा दीटा तमरो प्रोटॉन ये दीटा का तमरो अदर आसी की पहुंचियो प्लास्टोक्विनोन पाखरे सेठी से दीटा इलेक्ट्रॉन ना आवश्यकता करिवो कोन करिवो ना दीटा इलेक्ट्रॉन ना आवश्यकता करिवो the each particle includes P700 ferredoxin plastoquinone and others exist in many copies one extra electron from the P7 moves from the PS1 to PQ with the guide 1 of 4 FD as the subsequent photon strike the PS1 तो एठी तमरा कोन हबो ना P700 फेरोडक्सिन आ प्लास्टोक्विनोन ए समस्त तमरा कोन करिवे ना बहुत सारा कॉपी रे रहिथिबे गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तमरा कोन हेतिबो ना P700 रु मूव करिवो का माध्यम रे देकी P7 फोटोसिस्टम 1 टू प्लास्टोक्विनोन जो तमरा गाइड करिया पर रहिथिबो कि ना फेरोडक्सिन रहितो सेटा लेखिला विथ द गाइड ऑफ 1 मोर एफडी as the subsequent photon strike of photosystem 1 the two electron and two hydrogen particles are formed in the stroma तो stroma रे तमरा कोन हबो दीटा इलेक्ट्रॉन तयारी हबो ता संगे तमरा दीटा हाइड्रोजन्स मध्ये तयारी हबो it goes from the stomatal side of the thylakoid layer to the lumen side prior to the swing out to the cyto B6F complex तापर ये कोन हबो तो stomatal side रो thylakoid layer देखि तमरा ए lumen ने पहुंचीबो एवं तापर तमरा ये कोडी पहुंचीबो ना साइट BF पाखरे जाई तमरा पहुंचबा B6F पर पाखरे तमरा जाई पहुंची जीवो तापर से कोन कहूची ना प्लास्टोक्विनोन discharge the two hydrogen particles at the lumen side and move two electron to the cytochrome B6F on the thylakoid layer दीटा का हाइड्रोजन से कोन करे लुमेन साइड रे छाड़ दबो आ दीटा का इलेक्ट्रॉन तमरो नै कि साइटोक्रोम कागु साइटोक्रोम B6F कतरे नै कि पहुंचई दबो एबे साइटोक्रोम B6F रु तमरो फाइकोसियानिन तापर तमरो P700 को पुनी अगेन चली आसे देन फाइकोसियानिन गेट टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइट B6F द साइट B6F रु तमरो ये पाई गला प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन पाई गला एटी तमे माने खाली पिला जानिबो कोन ना इलेक्ट्रॉन नो मूवमेंट कोन जानिबो एटी ना इलेक्ट्रॉन नो मूवमेंट केमिति इलेक्ट्रॉन एटी मूव करूची गोटे जगह रु आ गोटे जगह को तमे ता विषय एटी डिस्कशन आमे करूचंदी तो पुनी अगेन द टू इलेक्ट्रॉन डेफिसिटी इन द टू P700 reaction center are compensated for using the two electron current to the two P700 RCR the opening operating normally तो जते बेले एटी तमर कोन आवश्यकता पडुची ना P700 रु तार इलेक्ट्रॉन पडितला पुनी अगेन इलेक्ट्रॉन से आवश्यकता करूची तो ये तमर कोन कर देना फाइकोसियानिन से इलेक्ट्रॉन ता से नबो नै कि तगु पुनी पहुंचेबो का कथरे ना P700 पाकरे तो जोउडी तमर इलेक्ट्रॉन ता जाइतला पुनी अगेन साइड फेरी आसिला ions moves over a selectively permeable membrane along their electrochemical gradient is called as chemiosmosis जो आयन गुडी का रहिचंदी से माने कोन कहउचंदी पिले ना तमरो ऑस्मोसिस करूचंदी बा तमरो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा ताकर हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन को जाउचंदी ताका हमें कहउचंदी कोन ना chemiosmosis higher hydrogen ion concentration found in the lumen and the lower hydrogen concentration are found in the stroma तो lumen stroma को हाइड्रोजन कोन होची ना मूव करिवो the inclusion of hydrogen ion during the electron transport by the plastoquinone ATP synthesis is transported of this H plus ion ATP synthesis produce तो ATP एवं एठी तमर कोन होची ना ATP रो फॉर्मेशन होउची एतले ये तमर मूव करूची ए जो हाइड्रोजन गुडी को आ ए हाइड्रोजन तो तमर आसी के एठी आसी की पहुंचुचंती तो एठी तमर कोन होउची ना ATP रो देखो एठी ATP रो देखो फॉर्मेशन होउची CF1 पाकरे कोन होउची देखो हम ATP सिंथेस एंजाइम जो कहउचंदी से जो दीटा का हाइड्रोजन से संगे रे नै के आउची प्लास्टोक्विन तो कोतला आनी से लुमेन ने छाडुची तो से हाइड्रोजन दीटा को जाई कि तमर ATP सिंथेस को साहाय्य करउचंदी से माने ATP रो फॉर्मेशन करेबे द इंक्लूजन ऑफ H+ ion during the electron transport by the PQ माने प्लास्टोक्विनोन ATP synthesis transport of this H+ ion ATP synthase produce ATP का कतरे नै पहुंचुची तो तमर ATP synthase पाकरे नै की पहुंचुची जे कि ATP रो फॉर्मेशन करिवो because the release electron in this photophosphorylase come back to the PS1
इट इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जोटू तुम इलेक्ट्रॉन गला पुणी एगेन आसी जो इलेक्ट्रॉन तुम आसी पहुंचला ताको आमे कहउछे कोन ना फोटोफॉस्फोराइलेशन। को फॉर्म रे होची ना साइक्लिक फॉर्म रे होची। तो ये तुम आज एति थिला पिले। नेक्स्ट क्लास रे मु तुम मानन को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विषय रे पढेबी। अल्प अल्प पढेबा बहुत टाइम अछि तुम मानन पे ना। तुम मान को जेति तुम मान को इनफॉरमेशन करा हो तुम मान लिखि पार बहुत इंपोर्टेंट अछि। मु पूरा सिंपल तुम मान पई नै के आछि पूरा सिंपल आठरु सिंपल तुम माने पाइबन पूरा नॉर्मल फॉर्म रे लिखाइ छै। एक्चुअली होउची कोन गोटे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जिंस ऊपर बेसी ध्यान दिया जाय छै। तो ठीक अछि जहाँ भी तुम मान को डाउट अछि तुम माने कमेंट करि परियो पचारि परियो। तो नेक्स्ट क्लास रे पुन थरे देखा हबा से पर्यंत पई समस्त को धन्यवाद। समस्त भलो रियो। थैंक यू पिला माने।